Assalamualaikum everyone. Hope you all guys are all doing great today. आज हम फिर से आपके साथ लाइव है विद अनदर एक्साइटिंग सेशन ऑफ योर रहनुमाई. ये माशाल्लाह से हमारा फिफ्थ वीक है और हमारा थर्ड डे है ऑफ दिस सीरीज. आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ लोकल प्रॉब्लम इनटू अ सोशल वेंचर के ऊपर, और जिसके लिए हमारे साथ जो हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं. शी इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द सोशल इनोवेशन लैब विच hosts Pakistan's first social enterprise incubator called the Hatchery. And मतलब इनका काम ही है कि social enterprises को providing them with the help and material and the skills to boost up their work. And she has also been working, she has also co-founded Daftarkhwan, which is a human-centered set of co-working community space across Lahore. She's an Acumen and a Laureate Global Fellow as well. So I welcome you, Maryam. Hope you are doing great today. Thank you, Rabil. I hope you're doing well too. I am, Alhamdulillah. अच्छा चले मरियम हम स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट डज इट मीन बाय अस लोकल प्रॉब्लम. मतलब लोकल प्रॉब्लम के अंदर क्या मतलब क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं लोकल प्रॉब्लम में आती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ लोकल प्रॉब्लम इनटू अ सोशल वेंचर. Local problem कुछ भी हो सकती है राबेल. It could be as simple as something that you see in your neighborhood कि बाहर अगर बहुत कचरा जमा है, या शायद हमारे neighborhood में जो है लोग जो हैं क्राइम बहुत बढ़ी हुई है, या इस तरह की कोई चीज़ है. लोकल प्रॉब्लम थोड़ी सी और हमारे नेबरहुड से बड़ी भी हो सकती है कि हमारे शहर में कोई मसला है, जैसे कि हमारे शहर में बहुत लोग जो हैं वो भूखे जा रहे हैं, या हमारे शहर में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जिनको एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं है. और फिर लोकल प्रॉब्लम थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है, राइट, कि हमारे मुल्क में ये मसला है और इस मसले के इस तरह से मैनिफेस्टेशंस हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, राइट, कि एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम बट it manifests itself in different ways across Pakistan. तो इस तरह से लोकल प्रॉब्लम्स जो हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग्स में भी वर्सेस अपने बिगर स्लाइटली लेस इमीडिएट बट स्टिल मोर लोकल सराउंडिंग्स. सही, बेहतरीन. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि मतलब हमारे जो इर्द गिर्द के जितने मसाइल हैं दे कंस्टिट्यूट एज अ लोकल प्रॉब्लम. सो लेट्स मूव ऑन टू डिफाइनिंग व्हाट अ सोशल वेंचर इज. आई जस्ट वांट ये जो टर्म्स है ना हमारे आज के टॉपिक है, आई जस्ट वांट कि ये वो लोगों को समझ आ जाए, देन वी मूव इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ दैट. सो लेट्स डिफाइन सोशल वेंचर. एक सोशल वेंचर क्या होता है? सोशल वेंचर जो है काफी चीजें हो सकता है, यानी कि सोशल वेंचर में एक सोशल गुड बिजनेस भी आ जाता है, एक नॉन प्रॉफिट भी आ जाता है, फॉर प्रॉफिट. क्योंकि वेंचर मीन्स एनीथिंग यू आर बेसिकली डूइंग, राइट. इट डजंट नेसेसरली मीन अ बिजनेस और अ स्टार्टअप. So what's important to distinguish is कि social enterprise is the business part of a social venture. A non-profit is the more, आपका एनजीओ पार्ट हो गया, या अगर नॉन प्रॉफिट ने वैसे नॉन प्रॉफिट इदारा खोला है उसका चैरिटी का किस्म का पार्ट हो गया. तो सोशल वेंचर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसपे मुख्तलिफ डॉट्स आते हैं, एंड one end of the spectrum forms the non-profit and the other end of the spectrum forms the for-profit business part. और इस स्पेक्ट्रम पे आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के इदारे आते हैं, राइट. कोई इदारा एज सच एक में फिट करता है वह हमेशा नजर नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा सा उसका बिजनेस मॉडल समझें या उनके ऑपरेशनल मॉडल समझें तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पता लग जाते हैं. तो सोशल एंटरप्राइज की मैं बात करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एंटरप्रेन्योरशिप वीक है और आप लोगों का, और जो है पीपल आर लुकिंग टू काइंड ऑफ आल्सो मेक दैट डिस्टिंक्शन. तो सोशल एंटरप्राइज में हमारी जो डेफिनेशन हमने बनाई थी, हमने काफी ढूंढा ना, क्योंकि ग्लोबली भी सोशल एंटरप्राइज की डेफिनेशन जो है थोड़ी सी इट गोज अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू वेयर यू आर इन द वर्ल्ड. एंड सम प्लेसेस यू विल फाइंड लाइक पाकिस्तान जहाँ पे के सोशल एंटरप्राइज का कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है. जिस तरह से फॉर प्रॉफिट कंपनी को अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप SECP में जाके करा सकते हैं. अगर आप चैरिटी रजिस्टर करते हैं तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ या SECP के साथ वंस अगेन आप करा सकते हैं. लेकिन सोशल एंटरप्राइज आप कहीं रजिस्टर नहीं करा सकते पाकिस्तान में. देयर इज नो लॉ फॉर इट. इसी तरह से और भी काफी जगहें हैं जहाँ पे ये एक
नॉन प्रॉफिट इदारा या मिक्स्ड हाइब्रिड इदारा भी एज सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर हो जाता है। तो इतनी कंफ्यूजन थी, तो हमने कहा अच्छा अगर हम एक प्योरली फॉर प्रॉफिट मॉडल देखें और पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो व्हाट वुड दैट लुक लाइक, इवन इफ इट कांट बी रजिस्टर्ड एज अ सोशल एंटरप्राइज। सो अगर वो नॉन प्रॉफिट रजिस्टर हो जाए, फॉर प्रॉफिट रजिस्टर हो जाए, वी डोंट केयर, व्हाट वी केयर इज कि ऑपरेशनली इज दैट अ सोशल एंटरप्राइज और नॉट। तो ऑपरेशनली आपने चार सही। चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज होती है कि हम्म। उसमें सोशल इनोवेशन है या नहीं है। अब सोशल इनोवेशन क्या चीज है, सही। इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक जो चीज होती है सोशल इनोवेशन में देखने वाली, वो ये होती है कि जी आपका जो प्रॉब्लम है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज इट। देयर्स टू टाइप्स जो कि सोशल इनोवेशन इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सोशल इनोवेशन से एक और मैं बात पहले से ही बताती चलूं, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बड़े लोग सोचते हैं अच्छा। ओ सोशल इनोवेशन, इनोवेशन का जब लफ्ज आया तो कुछ हमने बिल्कुल नया करना है या कोई हमने इजाद करनी है चीज। नहीं, कोई इजाद नहीं करना। सोशल सही। इनोवेशन इज primarily about solving a problem using something that already exists for the most part, but using it in a way that it solves a social problem, right? इसमें दो सही। किस्म के होते हैं। एक होते हैं, अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की टर्म्स में आप बात कर लें, तो एक होता है आपका मार्केट फेलियर, जहाँ पे कि ये हो रहा होता है कि जी सप्लाई और डिमांड जहाँ मीट करते हैं, इट्स नॉट एफिशिएंट। ठीक है, द नीड फॉर दैट प्रोडक्ट, द नीड फॉर दैट सर्विस इज ग्रेटर देन व्हाट द मार्केट इज प्रोवाइडिंग। The market is सही। providing a shortage of that product in order to raise the price. और वो जो सही है। एक्स्ट्रा लोग रह जाते हैं जिनको वो चीज नहीं मिलती, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मार्केट फेलियर। ठीक है, तो जिस तरह से अब इसी में हम बात कर लेते फिर दोबारा, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन है पाकिस्तान में, बिल्कुल है, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे करिकुलम भी हैं, लेकिन एक खास प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं। वो प्राइस पॉइंट अगर हर आदमी ना मीट कर पाए तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, एग्जैक्टली। वही गरीब अमीर में गैप आ गया, यू नो बर्गर खाने वाले और बन कबाब खाने वाले में गैप आ गया। तो दैट डिस्पैरिटी स्टार्ट्स देयर। हाँ। तो एक बिल्कुल। किस्म का तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप वही इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, राइट? कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस का या कोई भी आपके इकोनॉमिक प्रोसेस का जो आउटकम्स होते हैं, अगर उसमें कोई नेगेटिव नेगेटिव आउटकम आता है, राइट? है। फॉर इंस्टेंस कोको कोला बनती है या पेप्सी बनती है, राइट? दे टेक water from the ground, right? That groundwater basically is used to do all kinds of things, from replenishing your lakes and aquifers to giving water to your trees, to your plantations, to your larger water bodies. So when a company like Pepsi or when a company like Coke comes in and takes that groundwater, they are eventually causing the water table to fall, which causes droughts. So that's a negative. That's a दैट्स अ ha, नेगेटिव आउटकम ha. एग्जैक्टली। So it's an extremely negative outcome from a production हम्म। process that otherwise, seems sahi hai, whatever, right? Like another negative outcome of Pepsi and Coca-Cola is also that it makes people fat, right? So it's actually not good for your health. So that's another negative externality. तो देर आर सर्टेन प्रोसेसेस। इसी तरह आप आ जाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि जी उनके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जाके दरिया में बहते हैं, उनके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जाके आपकी वाटर टेबल को पोल्यूट करते हैं। तो इस तरह के हैं काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस में दे आर कॉजिंग ईदर हार्म टू पीपल और द एनवायरनमेंट और बोथ। And that's where you need, that's a social problem, that's a negative externality where you need a solution to come in. अब होता सही। ये इन दो मामलात में आमतौर पे द एक्सपेक्टेशन इज कि द गवर्नमेंट विल सॉल्व इट, राइट? बट या। व्हाट वी realizing is कि that's not happening. So when that doesn't happen, who are the people who are coming and solving these problems in a creative way, not necessarily entirely new way. So one सही। of my favorite examples is Dr. Mohammed Yunus from Bangladesh, who actually went and created a bank for poor people. आप और मैं जाते हैं, कर्जा चाहिए, कुछ चाहिए, हम बैंक में जाते हैं। इतने सारे करोड़ों लोग हैं जिनके पास बैंक का एक्सेस नहीं है।
क्योंकि उनके पास Exactly. कोलैटरल नहीं है, उनके पास एसेट्स नहीं है, उनके पास वो सारी चीजें नहीं है जो एक बैंक अकाउंट के लिए चाहिए होती है, बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक मेंटेनेंस के बैलेंस नहीं है, मतलब बैंक एग्जैक्टली राइट। मेंटेनेंस। तो Muhammad Yunus created a bank for the bankless. And that model, microfinance, has since taken over the world, 30, 40 years ke upar. We're seeing different kinds of that model come out. Some of them are incredible social enterprises like a Huat. Some of them are not. Some of them are actually creating market failures and negative externalities of their own, like we see in Latin America. सही। तो ये कुछ थोड़ा सा आई थिंक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है सोशल इनोवेशन में। जल्दी जल्दी बताऊंगी बाकी सही। तीन। तो सोशल इनोवेशन इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट। द सेकंड सही। इंग्रेडिएंट इज सस्टेनेबिलिटी, और इसमें आता है कि आपका मॉडल होना चाहिए फॉर प्रॉफिट, या इट नीड्स टू बी मेकिंग सम काइंड ऑफ मनी। फॉर प्रॉफिट ना भी हो, राइट, उसका हाइब्रिड मॉडल हो कि जी कुछ जो हम पैसे बनाएंगे सही। कुछ लोगों से और कुछ लोगों को हम मुफ्त में देंगे। लेकिन द आइडिया बिल्कुल। इज कि आपका जो business hai, it needs to create some revenue. Why? So that it can sustain itself. It should not have to rely on someone, feeling nice about you and writing you a donation check every year. It should not Yeah. rely on, some grant that may run out after 2 years. It needs to be self-serving. It needs to be Yeah. self-sufficient. It needs to be Yeah. self-sustaining. Yeah. Okay? Yeah. तीसरी चीज we're looking for is it needs to be scalable. कि ठीक है। इसका जो है आपका एक क्लियर रूट टू स्केल नहीं भी होती अक्सर बिजनेसेस में, राइट, बट द आइडिया इज कि इट कैन बी रेप्लिकेटेड, राइट। बजाय इसके कि हम एक ही कंपनी को बड़ा करते 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 नेस्ले, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन बना दें, व्हाट इफ हम एक ही कंपनी को रेप्लिकेट कर दें मुख्तलिफ जगहों पे, उसके बहुत सारे नाम हो, लेकिन सही। वो पार्टनर करें एक दूसरे के साथ, वो नॉलेज शेयर करें एक दूसरे के साथ, एक बंदे के ऊपर प्रेशर ना पड़े, एक इदारे के ऊपर प्रेशर ना पड़े, इदारे अपनी ह्यूमैनिटी ना छोड़ दें, राइट। सो द आइडिया इज कि स्केल, बट यू डोंट नीड टू स्केल vertically. There is unimaginable possibility to scale horizontally, and that's what differentiates social enterprises. And of course the fourth thing, which was from the beginning, it needs to have a measurable social impact, कि ठीक है। हमें वाकई वाज़े तौर पे लोगों की जिंदगियों में फर्क नजर आ रहा है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने जो चार अपने पॉइंट्स जो मेंशन किए that are necessary to having a successful social enterprise. I want to I want to discuss more on the second one, sustainability का factor. Now क्या होता है कि जब when you're starting about you have a startup and everything, and you are thinking of a very good goal, and you have a very good goal in mind, you have a very like social problem को आप deal कर रहे हो, and the idea comes when you're thinking non-profit, हाँ, but you need sustainability for for your own survival and for the company's survival, for the startup survival. हाँ, Now give us some kind tips that are really helpful for making your startup sustainable. हाँ। I mean, the first thing is, जब बहुत लोग इस तरह के मसले देखते हैं ना, बहुत सारे entrepreneurs को होता है कि यार हम ये नहीं कर सकते, we can't charge poor people money. So I'll give you an example of one of my favorite startups, Risk. When they started doing आपका वो, so Risk का थोड़ा सा मैं example दे दूँ, they do multiple things, but primarily they're targeting food wastage and food insecurity. So they're taking excess food from banquets, from restaurants, from big production companies, and redistributing them in low income communities at a low cost. Initially, सही। Risk did not want to charge. और रिस्क का मॉडल जब मैंने पाकिस्तान से बाहर देखा है, तो ज्यादातर ममालिक में, ऑलमोस्ट एक्चुअली सारे ममालिक में चार्ज कोई भी नहीं करता। और वो इसलिए बिल्कुल। बिकॉज एक आपके जहन में एक चीज इनिशियली क्लिक करती है कि ओ माय गॉड, मैं इन लोगों को कैसे खाना ना दे दूं, हमारी हमारी पहली जो इंस्टिंक्ट होती है दैट इज टू सर्व, and the instinct to serve is so great कि you would rather veer towards a charity model, right? But at the end of the day, you need to realize कि will people's hunger stop
if you feed them one day? Will it stop if you feed them for a week? Will it stop because you feed them for a month? And the answer is no, right? Because that hunger is not because, oh, हमने आज खाना नहीं बनाया. That hunger is because there's a systemic issue that is causing these people to be poorer than the rest of your society. And some days they just cannot afford to have food. Hmm. So, you know, for that kind of a systemic issue, charity would not work, right? Charity can work once, it can work twice, it can work maybe for a few months, even for a year. But after a while, what you need to target is this system. Where is this problem coming from? And Hmm. is giving something for free going to solve it? No, right? No. But एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि आप जब किसी को कोई चीज देते हो तो वो आपके ऑलमोस्ट एक कर्ज में आ जाता है, इवन तो आप नहीं कहते कि आप मेरे कर्ज में हो, राइट? बट द थिंग इज कि दे फील लाइक दे ओ यू समथिंग बिकॉज दे फील लाइक यू सेव्ड देम समहाउ और यू गेव देम समथिंग. Yeah. If you keep doing this day over day over day over day, the person feels like they have no dignity of their own, right? You Yeah. essentially And make then them कर्जदार to you. एक तो ये हो सकता है, एंड देन दे माइट इवन वो कर्जदार के उससे गिल्ट में भी आ सकते हैं, देन दे मे नॉट आस्क यू अगेन, और मे बी दे माइट गेट अनग्रेटफुल, दे माइट गेट अनग्रेटफुल, दे गेट इनटू दैट सिस्टमैटिक habit of getting that It's a free rider problem, right? So there's two exactly this, free right? ride problem. Pehla, they might feel very guilty and not ask you, or they might not tell you, or they might feel like they're always indebted to you, or dusra, they might just start becoming free riders. So either Yeah. way, it's a fail. It's a loss. But Hmm. when you allow people, because what you want to do is फिक्स द सिस्टम, रीबैलेंस द सिस्टम, राइट? इस वक्त क्या हो रहा है कि जी कोई बंदा खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा इसलिए वो खाना नहीं खा रहा, लेकिन व्हाट इफ वो खाना अफोर्ड कर सकता था, राइट? लाइक अगर मैं यहाँ हूँ, मैं खाना अफोर्ड कर सकती हूँ, तो व्हाट इफ मैं उसको भी यहाँ ले आऊं कि वो भी सही. खाना अफोर्ड कर सके, तो फिर क्या हुआ? मैंने उसको मेरे बराबर कर दिया. Hmm. And that's what risk eventually did, right? So risk, we talked about it, we mentored them, we spoke to a couple of other people, they went out and piloted a couple of things, and eventually we all realized that people will pay. They won't pay a Hmm. lot, but they would very happily pay because this is food that, the more affluent people eat. This is the same food. And these guys Exactly. are getting it at a fraction of the price. So not only are they eating high quality food, they are eating it by paying for it themselves, which feels incredible for their ego and their sense of internal motivation. Yes. It was so interesting. जब रिस्क ने ये खाना शुरू में बेचना शुरू किया, तो there were certain areas they were selling which were very close to DHA and all these affluent parts of the city, and people from the rich parts of the city started sending in their drivers and maids to pick up food for their homes, and they eventually had to start a ration card system whereby they mapped the entire community to make sure कि कोई इस चीज का फायदा नहीं उठा रहा. Oh तो my god. it's very Okay, tricky. this is very. Oh my It's god. very Okay, tricky, but nice. So. it's an example of how you can have a for-profit model without Hmm. really creating a burden for the poor, and more than that, Okay. allowing them a chance अच्छा, at their dignity again. सही हो गया. अच्छा, आई वांट नाउ आई बिकॉज एज वी टॉक्ड अबाउट द ये जो हमने एक सोशल हमने एक एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल सोशल प्रॉब्लम का हमने एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल डिस्कस किया. तो हाँ. आई वांट टू टॉक अबाउट जो टेक बिजनेसेस, जो टेक बिजनेसेस होते हैं या टेक सोशल एंटरप्राइजेस होती हैं, जो दे वर्क ऑन देयर कंप्यूटर्स एंड दे आर मे बी पुटिंग आउट गुड like रहनुमाई, it is a platform that is just putting out these videos out for the good of the people. So for, or maybe not Brandmai, maybe other platforms like these, they are doing things for good. So how do they make their model sustainable? Like what they should do? Eventually, you guys need to move towards a freemium model. ठीक है? So the idea is कि you give good content, you create a brand, you create a set of followers, people
really really like what you're doing, right? So आपने दो तीन चीजें की. पहला तो आपका प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी आपने बनाया. दूसरी आपने चीज ये की कि आपने एक यूजर बेस क्रिएट की. और तीसरी चीज फिर ये होती है कि once you've done both, right, created a very high quality product and B had created a user base that's loyal to you, that subscribes to your videos and your content. Uske baad, then you can start a model where you start charging for things, right? So there's two kinds of models. Ek model, and I think the one that people should be looking at primarily is क्रिएटिंग देयर ओन मनी, राइट? लाइक बहुत लोग आपसे बोलेंगे कि जी एड रेवेन्यू लगा दें, कहीं यहाँ कोने में एक बैनर चले किसी फला चीज का और उससे आपको एड रेवेन्यू आ जाए. बट एड रेवेन्यू ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव लाइक पीपल सब्सक्राइबिंग इन मिलियंस, right? Ad revenue does not work already like at like a 100 people user base or a 1,000 At a people beginning user base, level. right? Yeah. So ad revenue should never be the way you go about making money. The way you go about making money should always be through your core product. And if your core product is allowing you to make money, then you'll have a larger user base. And then as a secondary source of revenue, you can think about AdSense and ad revenue. Ads. Um, All right. एक और मैं एग्जांपल दूंगी आपको. बहुत सारे एडटेक बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए हैं, राइट? लाइक एडटेक बिजनेस शुरू से ही ऑनलाइन थे, लेकिन बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट इज नाउ ऑनलाइन विद द पेंडेमिक एंड कोविड, राइट? तो बहुत सारे स्कूल्स अब एडटेक बिजनेसेस के साथ पार्टनर कर रहे हैं. बहुत सारे लोग अपने घर पे जो है बच्चों को एडटेक बिजनेसेस के थ्रू और एडटेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं. तो पढ़ा रहे हैं. वहां पे भी they are able to charge a small fee depending on who is at the other side of that screen, right? Window. आपको Yeah. इसी का एग्जांपल देती हूँ. टेली हेल्थ, टेलीमेडिसिन, राइट? So once हाँ. again, one of my very favorite startup, Sehat Kahani, they've been doing tremendous work. और इस पेंडेमिक जब ये शुरू हुई तो पहले 3 महीने उन्होंने अपना सारे क्लिनिक्स फ्री कर दिए. Everybody was able to access a doctor for free. So one thing, like there's multiple things that came out of this, right? Number one, they did something very good for society for a lot of people who couldn't afford this, right? Everybody had access to doctors for free, and that allowed the actual hospital caseload to decrease. ठीक है? लेकिन दूसरी चीज क्या? उनका एकदम से फिर दोबारा यूजर बेस भी एकदम से बड़ी होगी. I'm pretty sure of it कि the numbers must have increased. और फिर तीसरी चीज, people signed on to their platform, they downloaded their app, they understood how it works, and they saw the value in it. And now they would be willing to pay for it too, because they realize कि यार, it's safer for me to sit at home and talk to my doctor on my screen as opposed to go to a hospital where I might potentially get infected with God knows what, right? So आपने उसको एक अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाई, आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया by giving it for free initially, and then you said, okay, hey guys, that was my first 3 months for free, here you go, now there's a small charge, here it is. That charge can be per visit, it can be monthly, and it can be yearly. और उसको आप ग्रेजुएटेड डिस्काउंट्स देते रहे, राइट? कि अगर सिंगल विजिट है तो उसको आप थोड़ा सा हाई चार्ज कर दें, मंथली सब्सक्रिप्शन है थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट कर दें, और ईयरली सब्सक्रिप्शन है तो उसमें जरा बड़ा डिस्काउंट कर दें. And that's how through pricing strategies also, you're encouraging more people to sign up with you for the longer haul. Interesting. And another मुझे एक example आ रही है. I don't know if it's a social enterprise or not, but they did turn into a social enterprise. So there's an app called AnyBooks. So you can literally find any book in that application. But they ran for like 2 years totally out of cost, but then they turned into that sustainable model, and now they're charging $10 for a lifetime subscription. So Right. just give $10 and then you have a life subscription to all of that books. So I guess these are great ideas on how people can make their models digitally or non-digitally sustainable. Thank you for that. Acha, so let's move on to let's rewind back, and let's I want to talk about how you when you're thinking about a social problem and you want to convert it into a social venture or like a social enterprise. How do you identify market gaps, or what are the tips to look at your market, and how to gain and learn from your own market? That's a great question. Because people create
solutions instead of understanding the problem. Like their first instinct is, oh ये मसला है, चलो मैं ये ऐप बना देता हूँ, चलो मैं ये बिजनेस खोल देता हूँ, सही। चलो मैं ये कर देता हूँ. And हम्म, that's not the right approach. And particularly for a social enterprise, that's a horrible approach. The right approach सही। is what we call human-centered design. The idea that you need to go out into the field and understand what the nature of the problem is. हम उसको कहते हैं falling in love with the problem. You need to fall in love with the problem before you even start thinking about the solution. सही है। If you're not in love with the problem, if you don't understand कि problem का nature क्या है, तो you're very unlikely to create a solution that actually works well and be something that people would actually pay for. हम्म, So the first thing is to go out there and understand कि ये problem है क्या, इसकी जड़ कहाँ है, ये किन किन लोगों को impact करती है, ये किन किन लोगों को किस किस तरह से इम्पैक्ट करती है, और कौन वो लोग हैं जो इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं या जिन पे सबसे ज्यादा नेगेटिव फर्क पड़ रहा है इसकी वजह से, और दूसरी तरफ कौन वो लोग हैं जिनको जो कि इन सम वेज इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या मैग्नीफाई कर रहे हैं. राइट, तो उससे हम्म, फिर आपको थोड़ी सी अपनी टारगेट मार्केट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है कि अच्छा ये मेरे कंज्यूमर बेस है, ये इन लोगों के लिए मैं सोल्यूशन बना रही हूँ, लेकिन अगर मैं इनके लिए सोल्यूशन बनाऊंगी तो क्या ये मुझे पैसे दे सकते हैं? अगर ये मुझे पैसे हम्म, नहीं दे सकते, कोई और है जिस तरह से वो बंदा जो कि इस सिचुएशन को और खराब कर रहा है, मैं उसको जाके क्यों ना बोलूं कि यार आप इसको सब्सिडाइज करें, आप इसको सही। जो है क्रॉस सब्सिडी देके आप इस मसले को हल करें. फर्ज करें जैसे हमने कॉर्पोरेट्स की बात की कि जी कुछ कॉर्पोरेट्स के जो प्रोसेसेस हैं वो काफी हार्मफुल हैं. तो हाउ हम्म, कैन आई वर्क विद अपना huge corporates कॉर्पोरेट्स। and ask them, हम्म, yeah, listen, these practices that you're engaging in are unsustainable, but I am creating this solution, you need to pay for it. सही। तो रिस्क भी मॉडल का मैं आपको बता दूं जरा सा कि जब वो रेस्टोरेंट से खाना उठाते हैं, रेस्टोरेंट उनको ना सिर्फ खाना देता है, उनको पैसे भी देता है. क्योंकि अच्छा, खाना उठाने के। जी, क्योंकि वो उनका एक्सेस फूड, एक्सेस वेस्ट उठा रहे हैं. दे आर एक्चुअली ऑफरिंग द रेस्टोरेंट एज सर्विस व्हिच इज वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट So the मैनेजमेंट, सही। restaurant is subsidizing a huge part of the cost, which is why it goes to the end consumer for such a low price. The सही। meal is being cross subsidized, both sourced and cross subsidized by the restaurant. हम्म, तो यानी कि नॉट ओनली यू नीड टू टारगेट के आप किस चीज को आप फायदा पहुंचा रहे, बट यू मे आल्सो नीड टू थिंक अबाउट कि जो वो चीजें प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं, तो उनको अगर आप देखेंगे तो यू मे हैव बेटर मॉडल्स ऑफ योर सोशल वेंचर और सोशल Exactly एंटरप्राइज। right. Like there's इसी तरह का मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. कोई एडटेक वेंचर है, ठीक है, वो आपके बड़े स्कूलों में, सिटी स्कूल, बीकन हाउस, इन स्कूलों में पार्टनरशिप कर लेते हैं और उनके स्टूडेंट से वो चार्ज करते हैं एक हाई एंड फीस, राइट, प्रीमियम फीस. तो वो जो उनके पास पैसे आ गए, दे कैन यूज दैट टू कवर देयर कॉस्ट एंड गिव द सेम प्रोग्राम टू लाइक अ टीसीएफ स्कूल फॉर अ लोअर कॉस्ट और फ्री. एग्जैक्टली। तो वो क्रॉस और फ्री। सब्सिडी कहते हैं उसे. और क्रॉस सब्सिडी मॉडल इसी तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर आप जाके अपनी टारगेट मार्केट देखें, उसके अंदर डिफरेंट प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें और फिर अंडरस्टैंड करें कि यार अगर ये बंदा नहीं दे सकता मेरा रेवेन्यू, तो कहीं और से आ सकता है, और वो कहीं और कहाँ है. तो यू नीड टू मैप द इंटरेस्टिंग। सिस्टम. Interesting, interesting. Thank you. That was a very, very. I think most people, many people would have learned from that. Acha, let's talk about digital marketing and having social ventures and digital space. Uh, because of these Corona slash COVID-19 times, most of the social entrepreneurs that are being established now are mostly are on their digital platforms. So let's talk about that कि वहाँ पे social issues को convert करना into digital social ventures. What how can they do that, and what are the things that they should be thinking about when doing that? देखिए,
डिजिटल वेंचर्स का इस तरह है कि वहीं you're gonna have to start with a free model where you're allowing people to um, have access to your solution or your product for free initially. Because the idea is you don't have a brand yet, right? आपने डोर टू डोर मार्केटिंग तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इवेंट मार्केटिंग नहीं कर सकते आप, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते आप, कोई बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट नहीं रख सकते, तो बहुत सारी जो आपकी बाकी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं, स्पेशली इफ यूर इन न्यू वेंचर, राइट? लाइक आई वुड Yeah, इवन say maybe new ventures should take a pause and reflect right now, okay, is what they're doing in fact still applicable to the market and right. to the situation? But let's even talk about older ventures, right? जिन्होंने online जाना पड़ गया, जो कि सारा काम उनका in person होता था, but now they're switching to online, right? Online. Yeah, Renumai would be an example. Another would be Science Fuse would be an example. बहुत yeah, सारे इस तरह के हैं. The History Project slash Beyond the Classroom would be an example. बहुत सारे इस तरह के हैं आपके yeah. एजुकेशन प्लेटफॉर्म, स्टेम प्लेटफॉर्म्स, जो कि इसी चीज Hmm. पे थ्राइव करते हैं कि यार मेरे सामने लोग हो, मेरे सामने बच्चे हो, मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊँ, मेरा वो ह्यूमन कनेक्शन बन पाए और हम साथ मिलके कुछ करें, राइट? And it Yeah. becomes very difficult to do that digitally, right? But Hmm. and then making that transition from a people first and in person first to a digital first company, it's hard. So what you need to do is eventually वही जिस तरह आप लोग करें, create very 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 good engaging content, create content Right. that people actually find beneficial, or Hmm. create or give a service that people are really needing right now, है ना? तो Right. जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जी लॉकडाउन हो जाते हैं इस पेंडेमिक में बड़े आराम से, पता ही नहीं चलता जी, 6 हफ्ते खुला और फिर उसके बाद एकदम से स्पाइक आए एंड देन लॉकडाउन अगेन, राइट? So Yeah. I'll give you another example. बहुत सारी tourism companies from Airbnb to another one that we incubated, Find My Adventure. They are shifting their models to in-home experiences. They used to be outdoor अच्छा. experiences, go outside to the great outdoors. Find My Adventure की बड़ी जबरदस्त अब tagline है, find yourself in the great indoors. Right? So what is अच्छा. the great indoor, right? How do you create the great indoor? So they're doing indoor experiences, sitting from your computer you could talk to someone all the way in I don't know, Australia, who's doing something over there, who's maybe on a Interesting. farm and Interesting. raising their farm animals. You could look at a short video that someone who went to Hunza made. You could look at you could get a video where someone is teaching you how to make balochi saji. So there's like all these options where you can now sit at home and use your time, right? So you could either explore new places through a digital platform, or you could actually So do great something example. हाँ. in the moment, right? Like they could actually be cooking with you right then and there. Yeah. So very interesting how businesses can just transform themselves into and adopt to the new new usual that we're living in. So interesting. Acha. So as we talk about the art of converting a local problem into social venture, um, let's talk about how do you let's talk about structuring a social problem. So here's the thing: many people might think that poverty is a problem in my city, and लोग जो हैं उनको खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, everyone is looking at that. I know risk did a very different thing to they looked upon the waste management time. Now I still see that there are people who still sleep with hunger. Risk is not covering the whole Lahore, right? So now how do I restructure the same problem? I'm just taking this example, and people can remodel it into their examples. तो कैसे करेंगे वो, मतलब how do you restructure a social problem? Being a trainer, I'm sure you can answer. So how do you mean structure a social problem? Like you mean in terms of geography, in terms of scale and scope? Yeah, in terms of scale. Yeah. Right. हाँ, तो इसमें देखो ना, you're right. Risk cannot cover all of Lahore. Risk cannot even cover all of Pakistan, right? Because like Pakistan क्या है, Lahore वही हम बात कर रहे हैं कि
एक बिजनेस या एक सोशल एंटरप्राइज कितना कर सकता है, स्पेशली एट कैपेसिटी, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ टाइम्स, राइट? एंड इफ यू नोटिस, risk, not just risk, actually a lot of social enterprises are now doing things in partnerships. So no Yeah. one is essentially doing things alone, because we're realizing that the problem, and finally we're realizing that the problem is so much bigger than all of us, राइट? और वही कहने का मकसद कि जी सोशल एंटरप्राइज में लोग कहते हैं वो जी कंपटीशन हो जाएगी, ये सोशल एंटरप्राइज इज द वन प्लेस where competition is great because it means you can collaborate. Right? Because you don't, वही idea ना, you don't need to scale vertically, you can scale horizontally. So what you can do is essentially partner with other people doing the same thing, whether they're following your model or not, right? Like there's so many people who are doing individual rations, and they had money, they were collecting money, and I connected them with Rizk and another partner, and they eventually started donating that money there, and then telling Rizk कि अच्छा हमें ये इस एरिया में चाहिए कि इस एरिया में राशन जाएं, क्योंकि आमतौर पे इस एरिया में कोई नहीं देखता. तो अच्छा what's मरियम, happening is two types of things, right? एक, प्री एग्जिस्टिंग अच्छा, एंटरप्राइजेस को लोग पैसे दे रहे हैं, जिस तरह से ये एग्जांपल दिया, लेकिन दूसरा, आपने शायद रॉबिन हुड आर्मी का सुना हो. या, They're Karachi based, but they have operations in other places too, right? So या, enterprises like Risk are actually now partnering with them and allowing them to do the same operations, allowing them, encouraging them to take over operations where Risk can't do what they have to do, right? So they're saying, hey guys, you're awesome. You and us, we're working with the same spirit. This is the plan of action we're following, and these are clearly geographies we can't reach. Can you do it? And so those for organizations are like, example, yeah, let's do it. you know why I brought this question up. So for example, you're living, so this is for people who might be living in a village and they see the problem, so they, they can reach out to, bigger social enterprises and take, partner with them, and bring that to their own village. For example, you're living in Tanduadam, and you just want to, have that in your region or your state, and you can, partner with that. So Absolutely. that's how, yeah. हाँ, So and Mariam, it's not just one, right? Like there's multiple organizations doing the same work. आप वही पैसे उठा के ईदी को दे दें, या वही पार्टनरशिप उठा के अखुवत से कर लें. So you will realize that all of them at the background, right? In the background, all of them are working together. चाहे वो अखुवत हो, रॉबिनहुड आर्मी हो, ईदी हो, रिस्क हो, कोई फला हो, they're all connected. जो कि हमें शायद on the face of it ना नजर आ रहा हो, लेकिन someone who's talking to them or understanding what they're going or how they're going about this, as a social entrepreneur, you're always looking at the system and multiple players and how to work with them and collaborate. तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि यार फलां नहीं कर रहा तो, या फलां कर रहा है तो मैं ना करूं. 100% घुस जाएं. प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम अकेले कर ही नहीं सकते, कोई अकेले नहीं कर सकता. सही. तो मरियम, लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा डिफरेंट इसको मोड में लेके चलते हैं. तो यू योरसेल्फ, आप एक इंक्यूबेशन सेंटर चला रही हैं, तो मेनी स्टार्टअप्स व्हेन दे आर कमिंग आउट, पीपल एडवाइस द यंगर वंस कि आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर में अपना जो स्टार्टअप है वो इंक्यूबेट करा दें. तो थोड़ा हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में बताएं कि वो करते क्या है, उनका मकसद क्या होता है, एंड व्हाई शुड यू collaborate with an incubator, not, or like, or maybe maybe some might not need to. So इसमें क्या, इसकी क्या साइंस है? So थोड़ी सी clarification, हमारा at the Social Innovation Lab, we do have an incubator, but we are not primarily an incubation center. So we're a lab that tests different things, right? Social enterprise incubation is one of the things we do, but we do multiple things outside of that too. We engage in research, we do projects, we work with the government and corporates. The idea is to make everything more socially equitable and just through social innovation. So But yes, a part of that has been our flagship program, the Hatchery, right? Um, जब हैचरी में लोग आते थे ना, तो हम एक काफी हमने चेकलिस्ट बनाई हुई थी कि अच्छा ये है. ऑफ कोर्स सोशल एंटरप्राइज वाली तो थी. एक हमने चेकलिस्ट बनाई हुई थी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर कि कैन वी एक्चुअली वर्क विद दिस पर्सन, विल दे बी ओपन इनफ to understand something like what we're trying to explain and what we're trying to spread here. And number three, will they actually be open to changing their minds? And that's one of the biggest things you're looking for
in an entrepreneur who wants to partner with an incubation center. अब सही होता ये कभी कभी कि एक entrepreneur को जरूरत नहीं होती incubation center की, right? हमारी एक रिपोर्ट निकली थी बियॉन्ड द बज अबाउट 2 years ago, जिसमें कि हमने इसको काफी कुरेदा था क्योंकि हमें रियलाइज हो रहा था कि देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? People are hopping from center to center, and we actually started asking entrepreneurs who came to us, have you ever been incubated before? And if you have, why are you coming to us? Don't come to us. If you've yeah already learned these tricks elsewhere, if you've engaged yeah with similar people elsewhere, you're wasting your time. And what we realized was दो तीन चीजें थी. एक वजह थी कि लोग चाहते थे कि उनको एक ब्रांड की एसोसिएशन या ठप्पा मिल जाए, तो दे वुड गो टू मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर्स. दूसरी वजह थी उनको सही फ्री ऑफिस स्पेस मिल जाता था, so that's why they would go to incubation centers, which is one okay of the reasons that, in fact, that we thought of Daftarkhwan and eventually launched it. और तीसरी वजह थी कि people wanted access to different kind of programs and a different pool of social contacts and networks, and not necessarily need business incubation. um, सही तो उसका फिर हमने यही नोटिस किया कि गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि when someone actually succeeds, there's multiple people fighting over it कि नहीं इसको तो मैंने किया था, नहीं इसको तो मैंने किया था, नहीं ये तो मेरी वजह से सक्सेस है. But the fact of the matter is कि any enterprise that succeeds, it succeeds because it has the support of a village. And that village can constitute of incubators, it can constitute of individual mentors, it can constitute of investors, it can constitute of accelerators. The idea is कि it's everybody's success. But सही from an internal measuring perspective, as an incubator, one would get wary कि यार ये बंदा 3 और जगह जा चुका है तो मेरे पास क्यों आ रहा है? And one सही should get wary, right? So if it's just about free space or just about whatever else, so that's not the best thing. सही For and from a flip side से अगर देखें startup की perspective से, तो yes, it's tricky partnering with an incubator because sometimes they would, charge you an equity. Sometimes they come with a cost. Sometimes they're going to, not necessarily understand what you're trying to do. तो फॉर इंस्टेंस अगर आप एक जैसे हमारे प्रोग्राम से सोशल एंटरप्राइज निकले, बहुत सारों ने आगे जाके एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स को परस्यू किया, कुछ ने परस्यू किया एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स जो कि बने ही सोशल एंटरप्राइजेस के लिए हैं, और कुछ ने सही परस्यू किए एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स जो कि नॉट नेसेसरली सोशल एंटरप्राइज के लिए नहीं है. उनमें हर किस्म का बिजनेस जाके एक्सेलरेट हो जाता है. और कल ही मेरी एक से बात हो रही थी एंड दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी एंग्री because they said कि यार we were part of this program and every time we would come out feeling like we were failures because we were not meeting that accelerator's definition of day to success. day yeah And the fact of the matter is, all right they couldn't, because social enterprises, their metrics of success are different. And that accelerator should have known that. But because it's not a specialized accelerator, that was not on their list of priorities on the top of their, headspace. They didn't approach that particular business like that. And that business came out of that program feeling like they don't know Jack. तो yeah ये भी that ये भी एक मसला हो that is सकता also है. part of the reality yeah हाँ. with incubators yeah हाँ. so so thank you Maryam for talking on such diverse topics and just we abstractly created the art of how to convert a local problem into into a local social venture. So Maryam, I would like you to just conclude कि क्या क्या चीजें involve होती हैं when you're thinking about making your own social venture. Just conclude it for us in 3 to 4 into 3 minutes. Yeah. Sure. So the idea is कि you want to go out there into the field. That's the biggest thing. अच्छा
प्लीज डोंट सिट इन योर ड्राइंग रूम एंड से कि अरे यार एजुकेशन का मसला है तो मैं उठा के ये खान अकेडमी बना देता हूँ। हाँ, खान अकेडमी बहुत अच्छी चीज है और पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह चल भी सकती है, लेकिन खान अकेडमी इज नॉट नेसेसरली द आंसर। द आंसर माइट बी Right. समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? कि आप जाएं और जाके मोहल्लों में रिमोट क्लासरूम्स इस्टेब्लिश कर दें, या Correct. आप जाएं और मोहल्लों में जैज के साथ या यूफोन के साथ पार्टनर करके एक्सेस टू फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर दें, ताकि कि बच्चे अपने पेरेंट्स के सेल फोन्स पे कोई लर्निंग कंटेंट सुन सकें। यानी Hmm. बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं करने की, जो नेसेसरली आपने बाहर देखा हो कहीं या फेसबुक पे देखा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में या आपके मोहल्ले में चल जाएगा। तो ठीक है। बहुत बहुत द प्राइमरी थिंग इज टू गो टू द ग्राउंड एंड मीट द पीपल हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, एम्पथाइज विद देम, स्टेप इनटू देयर शूज। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? आप उनकी जगह होते तो सबसे बड़ा मसला क्या सही। होता? कुरेद कुरेद सही। कुरेद, dig till you find out the root of the problem, and then see ठीक। कि यार who are the people involved in bringing this problem to this level, who are the people involved in potentially bringing a solution here, who are the people who are already working on this, can I partner with them, who are the people who are trying to work on this but are failing, can I help them? And if all of those questions are आपने आंसर कर दी और आपको फिर भी लग रहा है कि यार I'm the only one who can do something about this, so then start small, pilot करें। एक जगह जाएं, एक ज्योग्राफी में बैठ के उसका एक छोटा सा पायलट करें और देखें कि उससे क्या होता है। Does the problem actually get resolved? And B, Mhm. in that process, are you able to actually make money? Because if you're not सही। able to make money, then that's another problem, right? Then you want to maybe consider getting a big charity organization and applying that solution. But if that is getting solved, and if people are paying for it, then you are onto something. Then you have a prototype, you have a pilot that you have prototyped, and that so you have a prototype that you have piloted, and that या pilot gives you proof कि हाँ अब मैं इस प्रोटोटाइप को स्केल कर ये सकता चल हूँ, आई कैन सकता है। ब्रिंग दिस टू मार्केट। व्हेन यू ब्रिंग इट टू हम्म। मार्केट, फिर दोबारा देखिए कि यार अब मैंने इस मोहल्ले में या इस शहर में किया था, क्या इसको मुझे एक और मोहल्ले या एक और शहर में जाके रेप्लिकेट करने के लिए इसको थोड़ा सा बदलना होगा? वो किस तरह? तो आप बेशक 2-3 और पायलट्स कर लें नई जियोग्राफीज में, वहां जब आपको वही सेम सक्सेस मिल जाए, देन गो ahead and scale it up. Always remember, you don't need to do everything yourself. अगर सही। कराची में एक रॉबिन हुड आर्मी है तो वहां जाके आपको एक नया रिस्क बनाने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन हैंड्स, Risk and ज्वाइन। Robin Hood Army will bring this to you. Risk and XYZ will bring सही। this to you. Renomai and another platform will bring this to you. Sehat Kahani and this other mental health company will bring this to you, right? So the idea being, एग्जैक्ट। join hands, partner, social enterprise में कोई competition नहीं होती। कोलैब, क्योंकि मसले इतने बड़े होते हैं कि compete करने का कोई सोच भी नहीं सकता। The problems are so big, no one company can solve them. So you will only सही। increase your own social impact and potentially your own revenue streams by partnering with others. एग्री। And lastly, um, कोविड जैसी चीजें होती हैं, और जब कोविड जैसी चीजें होती हैं तो एकदम से हिट लगता है, बोथ आपके बिजनेस मॉडल पे, आपके फाइनेंसेस पे, लेकिन ऑल्सो ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो पैसा आने जाने वाली चीज है, उसकी ज्यादा फिक्र मत करें। जब आप काम अच्छा करेंगे तो पैसा पीछे भागेगा, right? The first एग्री। thing you need to एग्री। think about is your mental health and the mental health of those around you. And bring yourself to a point where you feel like, now I am in a place where I have helped myself. Now I can go back to helping others. Helping others. Thank you so much, Maryam, on that beautiful, beautiful ending note. We'd like to end here. Thank you so much, Maryam, for joining us and coming live with us. Thank you so much. And sharing us with all of the insight and all of that experience that you've learned in so these years with us. So now I would like to thank my audience who were live with us. I know I see that you were guys were coming live in with us. Thank you so much, guys, for engaging.
कल इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। कल का हमारा टॉपिक है हाउ टू रन अ स्मॉल बिजनेस ऑन डिजिटल मीडिया। तो कल हम टोटली अपना जो सेगमेंट है उसको डिजिटल मीडिया पे फोकस रखेंगे, एंड हम विल टॉकिंग अबाउट everything from marketing to advertising to what platforms to use, to what platform to use for which digital base. So inshallah कल हम हाजिर होंगे, कल हमारे स्पीकर साथ हामिद होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।